गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस जरूरी चर्चा में। चर्चा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलेगी। सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। Today, this is a very important meeting that we are having, and we know that we are having it at short notice. So, thank you to everyone who's made time to join us today. The meeting will be conducted in English and in Hindi. It's also being broadcast live on Facebook, and we will later put up the full video and also shorter videos from this meeting on YouTube and on other social media platforms. So today we are meeting to discuss the Digital Personal Data Protection Bill. The acronym is DPDP Bill. And why we are discussing it today is because it's likely to come up in Parliament for introduction and passage next week. And this is a bill that is fundamentally going to change how data, especially digital data, is handled all over the country. It's going to have an impact on every single person. It's going to have an impact on every organization that deals with data, that collects data, or that disseminates data, and not just registered organizations, but even unregistered organizations, even sangathans, even people's movements. And of course, most concerningly and alarmingly, it also seeks to amend the Right to Information Act, which we are aware of how widely it is used all over the country and how it's used by people to seek accountability from the government. So we will be hearing from people who spent considerable time examining the provisions of the bill and looking at how it's going to impact all of us, and also hearing from them what are the key concerns related to the bill. We are also being joined by some members of Parliament who will tell us what is likely to happen when it comes to Parliament. Some of you might have read with some alarm the recent report about the Parliamentary Standing Committee not being shown a copy of the bill that is proposed to be brought in, and they were in fact asked to sign off without seeing a copy of that particular bill. So there's been a lot of concern already related to what's going to happen. And we'll also be hearing and discussing what each of us as concerned citizens can do about this bill and how we can engage with this. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वो DPDP बिल, जिसका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो उसका होगा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल। तो मतलब जो हमारा जो व्यक्तिगत डेटा है जो डिजिटल फॉर्म में है उसके संरक्षण के लिए एक ये बिल प्रपोज किया जा रहा है सरकार द्वारा। और आज हम ये वेबिनार बहुत जरूरी वेबिनार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले हफ्ते ये वाला बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और जैसा कि हम सब देख ही चुके हैं और पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि बहुत जरूरी बिलों पर बहुत कम समय में चर्चा होकर वो केवल पारित किए जा रहे हैं। तो हम आज लोगों से सुनेंगे कि इस बिल को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं लोगों की, क्या क्या प्रावधान है ऐसे जो कि हम सबकी जिंदगी को इम्पैक्ट करते हैं, और इस बिल का प्रभाव हम सबके ऊपर होगा, हमारे संगठनों के ऊपर होगा, पीपल्स मूवमेंट्स पे होगा, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बॉडी सभी के ऊपर होगा। तो हम लोगों से सुनेंगे कि इसको लेके क्या क्या चिंताएं हैं। और साथ में हमें ये भी पता है कि इस कानून के माध्यम से सरकार हमारे सूचना के अधिकार कानून में भी एक संशोधन लाने की कोशिश कर रही है। तो उस संशोधन से क्या फर्क पड़ेगा हमारे सूचना के अधिकार कानून का, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि अब हम कर क्या सकते हैं, चिंतित नागरिकों के तौर पे क्या किया जा सकता है अगले कुछ दिनों में कि कम से कम हम अपनी आवाज उठाएं और हमारी बात को नोट किया जाए। और आप सब में से कई लोगों ने जरूर देखा होगा कि पिछले हफ्ते ही कुछ समाचार भी आया था इस DPDP, जिसको कि शॉर्ट में डेटा संरक्षण या डेटा प्रोटेक्शन बिल बोलते हैं, इसको लेके, जहाँ पे कि जो संसदीय समिति है उनके सदस्यों को बिना बिल दिखाए
सरकार की तरफ से कोशिश थी कि वो किसी तरह रिपोर्ट पे साइन कर दे। मेरी तरफ से एक और चीज बोलना जरूरी होगी और उसके बाद मैं आज के पहले स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। एक जो चीज जरूरी है बोलना वो ये है कि आज जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं वो वाला मसौदा है जो कि सरकार ने नवंबर 2022 में सार्वजनिक किया था। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट जो मसौदा है वो जनता को तो छोड़िए, वो संसदीय समिति के सदस्यों को ही नहीं पता। तो इसीलिए जो हम आज चर्चा कर रहे हैं और जो जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो उस नवंबर 2022 के बिल के प्रावधान को समझकर बात चलेगी। So just one more thing to highlight, which is that today's discussion is based on provisions that were made public by the government of the data protection bill back in November 2022. We know that since then the cabinet has cleared the bill, but unfortunately, not only do all of us not have a copy of the bill, in fact, even members of the Parliamentary Standing Committee do not have a copy of the bill. So our discussions will be based on the provisions that were publicly made available in November 2022. I will now invite the first speaker for today. Our first speaker for today is Anjali Bhardwaj. She is a co-convener of the National Campaign for People's Right to Information and a founding member of Satark Nagrik Sangathan. She has been working extensively for several decades on issues related to the right to information and also now been examining and studying how this bill is going to impact all of us and our right to information. तो हमारी पहली आज की स्पीकर है अंजलि भारद्वाज। अंजलि को कन्वीनर है नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन की और फाउंडिंग मेंबर है सतर्क नागरिक संगठन की और दशकों से उन्होंने काम किया है सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के मुद्दों को लेकर। सो ओवर टू यू अंजलि फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता। मैं अपनी बात यही कहकर शुरू करूंगी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार दोनों हमारे मौलिक अधिकार हैं। बोथ द राइट टू privacy and the right to information are fundamental rights of the people of this country. अब जब डेटा प्रोटेक्शन कानून जैसा कोई कानून आता है, सरकार बनाती है उसे, तो अपेक्षा यही रहती है कि सरकार ये याद रखेगी कि ये दोनों जो अधिकार हैं ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन दोनों को बैलेंस भी करेगी सरकार और इन दोनों को प्रोटेक्ट भी करेगी। लेकिन मैं अगले 10 मिनट में ये बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे जो ये डीपीडीपी बिल है जिसको अमृता कह रही हैं, जो कि डेटा संरक्षण कानून है, किस तरीके से ना तो हमारी निजता के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, ना ही हमारे सूचना के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि सूचना के अधिकार कानून को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ रहा है ये बिल, जो कि 2002 नवंबर में सरकार ने लोगों के सामने रखा। देखिए, जब सूचना का अधिकार कानून बन रहा था, हम सब जानते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद भी हैं जिन्होंने इस बिल के लिए, सूचना के अधिकार कानून के लिए एक लंबी मुहिम, लंबी लड़ाई लड़ी। और ये कानून जब आया, इसमें लोगों का बहुत योगदान था, ड्राफ्टिंग में भी। और उस समय पे ये ध्यान में रखा गया कि जब हम सूचना मांगते हैं तो कुछ सूचना ऐसी होनी चाहिए जो कि सब लोग ना लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनकी जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं या हम लोगों की कोई तकलीफ है उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो गोपनीय होने चाहिए, वो नहीं जरूरी कि लोगों को शेयर किए जाएं। इसलिए सूचना के अधिकार कानून में धारा 8 बनाई गई, सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि एग्जेम्पशन से डील करता है कि क्या क्या ऐसी सूचनाएं हैं जो हम सरकार से नागरिक होने के नाते भी नहीं ले सकते। और उसमें सेक्शन 8(1)J लाया गया, धारा 8(1)J, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई निजी सूचना है तो उस सूचना को हम नहीं ले सकते अगर उस सूचना को लेने से किसी का अनुचित इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी होगा, अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी। तो मान लीजिए मैं किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहती हूं, तो मैं केवल फॉर वाइकेरियस रीजंस वो सूचना नहीं ले सकती।
अगर निजी सूचना का किसी पब्लिक इंटरेस्ट या एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जनहित में नहीं है वो सूचना, तो मैं नहीं ले सकती उस सूचना को। लेकिन अगर कोई ये प्रूव कर सके कि उस सूचना को लेने में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, जनहित है, तो वो सूचना ली जा सकती है। तो इसका मतलब है कि सूचना के अधिकार कानून में जो 2005 में आया, जिसे हम 17 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी दोनों को बैलेंस किया गया था बखूबी तरीके से, सूचना के अधिकार को और निजता के अधिकार को। और हम देखते हैं कि तमाम ऐसी सूचनाएं हैं जो कि 81J का इस्तेमाल करते हुए सरकारें हमें मना करती हैं कि नहीं हम दे सकते, क्योंकि ये निजी सूचना है, ये नहीं दी जा सकती। अब सरकार जब डेटा प्रोटेक्शन कानून लाती है, ये कहती है कि हम आपकी निजी सूचना को का संरक्षण करना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत क्लियर है कि सूचना के अधिकार कानून से छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि ये केवल हम नहीं कह रहे, ये जस्टिस AP शाह की कमेटी जब बैठी, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से सूचना के अधिकार कानून का ड्राफ्टिंग हुई है, अगर हम डेटा प्रोटेक्शन कानून चाहते भी हैं, हमें RTI कानून को नहीं बदलने की जरूरत, संशोधित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार ला रही है, उसमें सरकार ने क्लियरली एक क्लॉज डाल दिया है कि अब हम इस कानून को संशोधित करेंगे। सूचना के अधिकार कानून की धारा 81J का स्कोप बढ़ा दिया गया है और अब सरकार कह रही है कि सारे नुएंसेस को रिमूव कर दीजिए, सब कुछ छोड़िए, अगर निजी सूचना है तो हम नहीं देंगे। धारा 81J में उन्होंने ये कह दिया। अब आप ये समझिए इसका क्या मतलब होता है। सबसे प्रॉब्लम बड़ी इसमें यह है कि अगर हम पिछले 17 साल का इस्तेमाल देखें सूचना के अधिकार कानून का, लोगों ने क्या सूचनाएं मांगी हैं सरकार से। सबसे ज्यादा सूचना लोग मांगते हैं अपने अधिकार हासिल करने के लिए। तो आपका राशन, आपका पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप, अगर कहीं पर इलाज नहीं हो रहा, ये सारी सूचनाएं अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो लोग सूचना मांगते हैं। तो ये सोचिए कि कोई एक महिला है जिनके परिवार को राशन नहीं मिल रहा, तो वो कैसे सूचना मांगेंगी। वो ये मांगेंगी सूचना कि मुझे मेरे राशन की दुकान के रिकॉर्ड दिखाइए, बताइए किस किस के नाम का राशन आया, किस किस को राशन बटा। और हम ये जानते हैं कि जब ये सूचनाएं बाहर आती हैं तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद बाहर आ जाता है। पता चलता है कि ऐसे लोगों को राशन बट रहा है जो कि या तो सालों पहले मर चुके हैं या वहां रहते ही नहीं हैं और उनके फर्जी नाम पर राशन बट रहा है। तो उसी तरीके से लोग अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और अपने अधिकार जो है वो सरकार से लेते हैं। पेंशन में भी हमने यही देखा है, इतनी बार घोस्ट नेम्स को पेंशन मिलती है। स्कॉलरशिप्स में जो दलित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्कॉलरशिप है, एडमिशन है, वो तभी सही लोगों को मिल सकती है जब ग्रैन्युलर निजी सूचनाएं अलग अलग तरीके की लोगों के हाथ में हो। अब क्या ये सूचनाएं लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरी बात आप देखिए कि किस तरीके की सूचना लोग चाहते हैं। लोगों ने सूचना के अधिकार कानून में ये पूछा है कि जो तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक हैं हमारे, वो इतने बड़े बड़े लोन बड़े बड़े पूंजीपतियों को देते हैं, वो पूंजीपति फरार हो जाते हैं। पैसा किसका है? पैसा हमारा है, हमारा पैसा डूब रहा है, पूंजीपति लेकर वो पैसा फरार हो रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है, कौन लोग हैं जिनको पब्लिक सेक्टर बैंक बड़े बड़े लोन देते हैं और उनके लोन माफ कर देते हैं। आज एक कोई गरीब इंसान 1000 रुपए 2000 रुपए का भी लोन ले अगर किसी बैंक से, तो क्या वो माफ कर दिया जाता है? क्या वो लेके भाग सकते हैं? तो लोगों को जानने का अधिकार है कि ये उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किसको दिया जा रहा है। उसी तरीके से
सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जो भी चुनाव में खड़े होते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो कितना पढ़े हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये सब निजी सूचना है। लेकिन कोर्ट ने खुद कहा है इन द पास्ट कि ये सूचनाएं मिलनी चाहिए लोगों को। लोग तो ये भी कहते हैं कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर हमारे मंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इतना पढ़े हैं, हम सूचना मांगना चाहते हैं वेरीफाई करने के लिए कि वो सही बात है कि नहीं। वोटर लिस्ट, किसी भी लोकतंत्र में आप इलेक्टोरल फ्रॉड को कैसे रोकते हैं? सबसे सक्षम तरीका है कि वोटर लिस्ट को आप मुहैया करा देते हैं लोगों को, वेबसाइट पे डाल देते हैं, चिपका देते हैं वॉल्स पे, जिससे लोग चेक कर सकें कि मेरे घर में या मेरे पड़ोसी के घर में या मेरे मोहल्ले में या कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है गलत लोगों के नाम ऐड किए गए हैं और गलत लोगों के नाम काट दिए गए हैं। क्योंकि अगर ये होने लगा तो फिर तो चुनाव का कोई मायना ही नहीं रह जाएगा। पर ये भी सब निजी सूचना है, क्योंकि अगर आप वोटर लिस्ट को देखें उसमें आपका नाम होगा, आपका पता होगा, आपकी फोटो तक होगी। तो क्या ये सूचनाएं लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? अब अगर ये डेटा प्रोटेक्शन कानून, इस मसौदे को जो हमारे पास है वो पास हो जाता है, तो ये तमाम सूचनाएं लोगों की रीच के बाहर होने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। और मुझे लगता है कि जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल हम सब लोग करते आए हैं लोकतंत्र में, अपनी जगह, अपनी सरकार से सवाल पूछने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए, वो पूरी जगह संकुचित हो जाएगी। हमारा ये अधिकार फिर हमसे छिन जाएगा। मैं दो प्रॉब्लम्स जो डेटा प्रोटेक्शन कानून में है उस पर और चर्चा करना चाहूंगी, और बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये दोनों बातें भी हम याद रखें। जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, डेटा संरक्षण कानून है, इसके तहत अब जब कानून आएगा तब से जिसके पास भी किसी और की पर्सनल डेटा होगा उसको डेटा फिडुशियरी कहा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो या तो सरकार के कामकाज पर निगरानी रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, या फिर वो रिसर्च करते हैं, उसमें सर्वेस करते हैं, या फिर कई बार हमारे साथ आज पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ नेता जुड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी लिस्ट बनाती हैं कि भाई कौन है जो हम उनसे जाके बातचीत कर सकते हैं। जिसके पास भी सूचना होगी वो अब डेटा फिडुशियरी कहलाएगा। और इस बिल में लिखा है कि डेटा फिडुशियरी किसी की भी सूचना नहीं रख सकते, उसको स्टोर नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक एक रिटन नोटिस ना दें और नोटिस के बदले कंसेंट ना लें। तो अब आप ये सोचिए, बस्तियों में, गांव में लोग लिस्टें बनाते हैं, किसके पास राशन कार्ड नहीं है, किसके पास बीमा सरकारी नहीं है, लिस्टें बनाकर फिर इकट्ठे होकर लोग जाते हैं अपना अधिकार लेने। तो वो काम कैसे होगा? और इतना ही नहीं, इसमें एक बड़ा कैच है। सरकार कह रही है हम तय करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, केंद्रीय सरकार, कि कौन डेटा फिडुशियरी कहलाएगा और कौन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब अब केंद्रीय सरकार अगर चाहे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास हमारा डेटा है, गूगल है, जियो है, UIDAI में हमारा सारा डेटा पड़ा है, इन सबको ही तो डेटा प्रोटेक्शन बिल में लाने की जरूरत थी। लेकिन अब जब सरकार अगर चाहेगी तो सरकार इन लोगों को डेटा प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर कर सकती है, कह सकती है नोटिफिकेशन के जरिए कि ये डेटा फिडुशियरी है ही नहीं। तो ये बिल किसके लिए लाया जा रहा है? आप पे और हम पे अंकुश लगाने के लिए, सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने के अंकुश लगाने के लिए, कि हमारे निजी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। ये एक बड़ा सवाल। दूसरा, अगर कोई डेटा फिडुशियरी कुछ गलत करते हैं इस कानून में तो उनकी शिकायत एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास की जाएगी। अब आप अगर देखें इस बिल को, इसमें लिखा है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को सरकार तय करेगी कैसे सिलेक्ट किया जाए और रिमूव किया जाए। तो मतलब ये तो पूरी तरह से सरकारी बोर्ड ला रही है सरकार, कि हम ही तय करेंगे कौन बैठेगा इस बोर्ड पे, उसको हम जब चाहें हटाने की ताकत रखेंगे।
इसकी मैनेजमेंट हम करेंगे बोर्ड की, और फंक्शंस भी हम ही डिसाइड करेंगे बोर्ड के। तो अब आप ये समझिए कि इस बोर्ड को सरकार ने ताकत दी है इस बिल के जरिए कि वो किसी पर भी 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि बहुत पोटेंशियल है इस बोर्ड को वेपनाइज किया जाने का। हम देखते हैं आज के किस तरह से एजेंसियों को सरकारें मिसयूज कर रही हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, अलग अलग एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। अब एक ये नई एजेंसी लाई जा रही है जिसका मिसयूज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी के ऊपर भी आप कहेंगे आपके पास तो पर्सनल डेटा है लोगों का, तो हम आप पे 500 करोड़ रुपए का फाइन लगवा सकते हैं। उनका तो कोई काम नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और बड़ी कंपनियां, UIDAI, जियो, इन सब के ऊपर सरकार अगर कह दे तो वो इस बिल के दायरे से बाहर। तो आज सवाल ये है कि हमारे जो अधिकार हैं, सूचना का और निजता, दोनों के ऊपर प्रहार हो रहा है। इस बिल को हमें विरोध करना है। उसी सिलसिले में आज का भी ये वेबिनार हुआ है। बहुत जरूरी है कि हम अपने सभी MP से, जो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, BSP में है, SP में है, कहीं पर भी हो, DMK, AIDMK, हम सब से कहें कि आप इस कानून को मत आने दीजिए। ये लोगों के खिलाफ है ये कानून, और इस बिल को इतनी गोपनीय तरीके से मत लाइए कि आज हमें ही नहीं पता, MPs को भी नहीं पता कि इस बिल में क्या लिखा है। और सुन ये रहे हैं कि पार्लियामेंट में, क्योंकि जिस तरह से चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में बिना किसी चर्चा के बिल पास हो रहे हैं। दिन ऑफ द हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बावजूद बिल पास हो रहे हैं बिना किसी डिबेट के। इस तरीके से ये बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे अधिकारों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होगा। और जरूरी है कि हम वीडियो बनाएं, हम पिटिशंस बनाएं, अपने MPs को भेजें और कहें कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। इस ढांचे को तो हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। शुक्रिया अमृता। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, आपने कम समय में बहुत जल्दी हमें एक्सप्लेन कर दिए सारे की कंसर्न्स। आई विल जस्ट डू अ क्विक ट्रांसलेशन एंड देन आई विल बी इनवाइटिंग प्रोफेसर राजीव गौड़ा to speak next. So Anjali essentially highlighted the key concerns related to the bill. She traced the history of the bill essentially after the Puttaswamy judgment, in which the Supreme Court held right to privacy to also be a fundamental right, and actually recommended that the government bring in place a data protection bill. The hope was that the government would try and strike a balance and actually ensure that people's right to information and people's right to privacy are both adequately protected. She says instead what we see is that the government is playing one right against the other right. She highlighted 3 or 4 key concerns. She said, if we look at it, the first thing is that the bill seeks to amend the Right to Information Act, and the amendments that it proposes to the Right to Information Act are extremely regressive and will take out of the ambit of the Right to Information Act a lot of crucial information. She highlighted that the Right to Information Act in Section 8(1)J already recognized the right to privacy and said any personal information that is not related to public activity or public interest, or which would cause unwarranted breach of privacy, cannot actually be disclosed. So there was already this recognition of protecting personal information and privacy. However, the data protection bill is suggesting that all of these nuances be done away with, and this clause simply be replaced with one line saying that henceforth all personal information will be denied under the Right to Information Act. She said this is extremely problematic because if you look at how people use the Right to Information Act for accountability, a lot of accountability stems from very often accessing information that is related to personal information, that might be granular information. She gave several examples of rations, of pensions, of social welfare schemes, where how lists of beneficiaries is required in order to carry out social audits, in order to check delivery at the ground level. She also highlighted how it is only through the Right to Information Act that information has started coming in the public domain of names of willful defaulters and large NPAs, people who take loans from public sector banks and then default on those and then run away from the country. And she said this kind of information is crucial for ensuring government
government accountability. She also highlighted that there is concern that after the DPDP bill comes in, would even information like electoral rolls, which we know is so crucial for people to monitor, would that also be taken out of the public domain? We know how people and civil society groups closely monitor additions and deletions around election time to the electoral rolls and make sure that it's actually people who live there, who actually exist, are actually on those rolls. She also said that another very concerning issue that's coming up through this bill is the fact that any person or any group that deals with data will henceforth be known as a data fiduciary. So this would include all organizations, civil society groups, whether registered or unregistered, which carry out fact findings or which do surveys or which actually go into the villages and slum settlements and make lists of people who may not have ration cards, who may not have access to other government entitlements. All of these sets of people will be termed as data fiduciary, and there are a set of compliances and obligations that are mandated on them, including informed consent, including purpose specification, etc. And any violation of any of these provisions by a data fiduciary would invite a very harsh penalty. And most concerningly, the body that is being set up under the DPDP bill for oversight and monitoring, which is called the Data Protection Board, is a body that's completely under the control of the government. The selection, the removal, the management of affairs, everything will be controlled by the government. And therefore, she said that there is a genuine apprehension that such a body would take selective action, especially we know the times that we are living in, where even there is, it's often, there's this thing in the public domain that investigative bodies and other bodies are being used in a targeted way against those who are raising their voice, against opposition, against dissenters. So she said this body could also become like that, given that it's completely under government control and it has huge powers of putting penalty of up to 500 crore in each instance of violation by a data fiduciary. So she said these are all very crucial concerns related to the data protection bill, and she said that all of us must raise our voice, especially given how Parliament is currently functioning. So thank you very much for that, Anjali. I would now like to invite our next speaker for today. That's Professor Rajiv Gowda. He is from the Congress Party, a former member of Parliament of the Rajya Sabha, and he is very active in terms of issues related to research around legislations, and also what are the kind of concerns that the party would be raising. So very warm welcome and thank you to you, Professor Gowda, for coming. You have been participating and raising your voice on issues related to right to information. So आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राजीव गौड़ा है हमारे अगले स्पीकर। प्रोफेसर राजीव गौड़ा कांग्रेस पार्टी से हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, और इस समय भी वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं कि जो भी बिल, जो भी मसौदे आ रहे हैं सामने, उनके ऊपर क्या क्या मुद्दों के ऊपर जरूरी है रोशनी डले, क्या क्या मुद्दे उठाए जाए, उन सब चीजों पे। तो ओवर टू यू प्रोफेसर गौड़ा फॉर द नेक्स्ट 10 minutes. Thank you, Amrita. Already we've had Anjali Bharadwaj give us a good sense of some of the complexities and challenges posed by a bill whose draft we are yet to see. And this is one of the major problems that we have, that the government is going through this process of pushing, bulldozing bills through Parliament and not allowing adequate discussion, and certainly not sharing drafts in time for us to have an informed view beyond what we have already been able to see in previous drafts and general discussion around the bill overall. Now, the first thing I'd like to point out is that there is a right to privacy that came out from the Puttaswamy judgment of the Supreme Court. But if you look at Puttaswamy and you read it along with the Aadhaar judgment, there is a limitation on privacy, and the government can override privacy, the right to privacy, in certain instances, but only if it is proportional to the purpose, right? So there is a very
court, at least Supreme Court, has ruled that there's limited and proportional way in which this can be done. There has to be some clarity in what that proportionality standard really means. Now, in this bill, there is no clarity at all on what could be that standard of proportionality. And essentially, all government entities can be given exemptions for whatever action that they take. Now, basically, this means that the government can arbitrarily determine who has the right to privacy and how much and when. And basically, this essentially undermines that the fundamental right to privacy overall. And so instead of the government being governed by the law, we are governed by the government's ability to decide whatever the law means according to it at any given point. So that's the first aspect. So this government accountability disappears, and they can exempt any instrumentality of the state. That's really what the wording is. And there's no real clarity on what that means. Who or what entity is an instrumentality of the state, and to what extent can they get away with whatever they want to do? Now, the other interesting feature, number two, is the nature of what we call the formal legislation and subordinate legislation. The bill is what is the main legislation. This is something that we all get to see. And typically, the broad outlines of any legislation is listed in the bill. And a lot of the details on how the exact application will arise in different contexts, that is normally left to what is called the framing of the rules. The rules will be framed by the government, and then they will be tabled in the Houses of Parliament. And once those rules are accepted, they become the details on how the bills or the acts provisions apply in different contexts. Now, in this bill, if you look at a previous version, there were about 90 clauses. There was a lot of detail in the bill itself. Now it's been brought down to 30 clauses, and the operational details have essentially been left to subsequent rules. Now, can the government do anything it wants? Not really. There is, in both houses of parliament, there is something called the Subordinate Legislation Committee. And the duty of the Subordinate Legislation Committee, the mandate, is to look at the rules that have been framed and to examine whether those are, congruent with the actual intent and purpose of the overall act. Now, I have been a member when I was a member of parliament for full 6 years. I was a member of the Subordinate Legislation Committee. And I can tell you that while we did some good work, this is subordinate legislation review needs to be strengthened significantly. And in the context of something so complicated as the details of how this act will apply in numerous operational circumstances, I'm not sure that it will essentially be multiple years before Parliament even gets around to checking on how these rules are being implemented and what's happening and what's not. And so this legislative review process to check and balance what the government can do, this is a dimension that really needs strengthening. And I think in the current circumstance, it's not really going to make much of a difference. The government will be free to do whatever it wants. Third, what will the government do if it can do whatever it wants? One of the features that we've seen in recent years is that the government especially the government under the political party that runs the government currently, is prone to essentially surveillance. We in the opposition have been very, very worried that there are technologies like Pegasus that have been put on our phones without us knowing to track whatever is going on, whatever we're saying. And so essentially we are concerned that this regime could go further in the direction of mass surveillance. And if the government is essentially exempt from having to
respect privacy, then their data protection standards are not there, and they could just go right all the way towards mass surveillance. And the other problem with the government collecting all this data is that we've seen numerous instances of massive data leakage. And even most recently, we saw this in the context of, I think, Aadhaar data and things like that. Okay, so and if you actually see, these are issues that we must pay attention to, and it's a matter of grave concern. Now, one other dimension that we want to have, if we as individuals are data fiduciaries, these are our data principals, sorry, and this is the data that is held by the data fiduciary, and we want to close an account and move to another entity, another platform, right? We used to have the right to data portability. Now, this right to data portability allowed us to download all our material, all our data from one platform and shift to another platform. Now, it doesn't look like this right to data portability exists anymore. And this really puts us in a difficult situation. For example, say I want to switch from Gmail to Proton Mail. Now, Gmail has all my emails for the last dozen years, and it has a record of a lot of information and discussion that I've had with a lot of people. And if I no longer have the right to collect that, download that data, and move to another platform, then the entity, the Gmail from Google, can basically tell me to just take a walk, and I will lose all that material if I do not continue to pay for access to it, right? If you recall, just to give you a sense, Gmail started with the idea that everything is free. We got used to the idea of not being very careful with what we retained, what we deleted, and then suddenly we ran out of space, and now we all have to pay to maintain our to have access to what we have. It would be good to move it, but what if it's not a right anymore? Another story, and this is more an anecdote. Many of you will recall that the government has been very, very angry with fact-checking firms. And one fact-checking firm that gets them very angry is an organization called Alt News. And they went and arrested one of the co-founders of Alt News, a gentleman called Zubair, and put him in jail. And ultimately, he managed to get out. But basically, when they wanted to go after Alt News, they went after the entity that processes donations to Alt News, a company called Razorpay. And the moment Razorpay was pressured, they shared all the data of all the donors to Alt News with the government, right? So they had no control over the data that rightfully belongs to them of people who are donating to their organization. And the government argued that foreign money is coming in, and these guys said, no, that's not allowed at all. But nonetheless, this is how the government can actually misuse and put so much pressure that these kinds of organizations will be cornered, and any other platform will say, we don't want to provide a way for these people to raise money, because then the government will go after the mechanism and make it very, very difficult it will make it very difficult for organizations like this, which actually play a very active role in fact-checking and exposing lies of the ruling party, especially. They will be very, very constrained for resources. The last part the last point I want to make is about is wearing my management professor hat. I used to be a professor at IIM Bangalore. See, what is happening is that historically over the years, data could be collected, and then there were parties that would sell that data to smaller, newer startups, etc. So this third-party data providers will mostly now will go extinct. When that happens, who will have access to people's data? The big platforms, which have a lot of information, and people can't do without it.
right? So if you are used to exchanging information with friends on Facebook, then what are called network effects prevent you from quickly and easily switching to some other platform. So you're sort of locked in, and these big players will be able to collect all your data. They'll be able to do what they want with it, while the smaller players, the startups who wanted to come in and provide new services, they will essentially be driven out. So we will end up with essentially captive end users with mega players in these mega platforms, and the ability of smaller, nimble startups to come in, provide services based on third-party data will disappear. So this is essentially an unintended effect on markets and competition, and it's a very tricky aspect, but here we are. These are the main points I wanted to raise. I'm sure there are many more, and I also have a few more, but I don't want to take more time than necessary. And so we are opposed to the way this bill is being brought in, and whatever contents we've seen so far. It's not clear that this bill is actually going to improve personal data privacy and protection. It may actually just hand over control to the government to and help create a surveillance state, which is the last thing we need. Thank you so much. Thank you very much for that, Professor Gowda. You touched on several points which probably haven't been brought up in the public domain thus far. So I'll just do a translation of the key issues that you highlighted in Hindi. तो प्रोफेसर गौड़ा ने बोला, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो प्रक्रिया है इस मसौदे को लेके वो ही बहुत अजीब है। उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि संसदीय समिति को ही दिखाया नहीं गया कि बिल का फाइनल मसौदा क्या है और उस रिपोर्ट में क्या है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है पहले कि एक बिल के ऊपर एक संसदीय समिति बैठी हुई है, लेकिन उस समिति को ही नहीं बताया जा रहा कि उनके नाम में क्या लाया जा रहा है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जब पुट्टास्वामी और आधार का जो जजमेंट था, तो उस जजमेंट में एक बहुत जरूरी एक प्रिंसिपल ले डाउन करा था सुप्रीम कोर्ट ने, और वो था एक प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल, कि आपको जब तय करना है कि कहाँ तक नागरिक के अधिकार हैं और कहाँ पे जाके स्टेट रोक सकता है किसी भी अधिकार को, तो आपको उसका एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट आपको ले डाउन करके आपको देखना पड़ेगा। और प्रोफेसर गौड़ा का कहना है कि अगर हम इस पूरे बिल को देखें तो इस बिल में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट ले डाउन नहीं किया गया है, यानी कि ये नहीं बताया गया है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेके यदि कोई बोले कि ये तो मेरा डेटा निजी होना चाहिए, या फिर कोई बोले कि नहीं ये तो डेटा मुझे अवेलेबल होना चाहिए, तो उसको कैसे कोई देखेगा, उसको कैसे कोई नापतोल करेगा। उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई भी प्रावधान नहीं है और बिल्कुल साइलेंट है इस प्रोपोर्शनैलिटी के मुद्दे को लेकर। और उन्होंने बोला कि एक जगह तो साइलेंट है और दूसरी जगह पूरी तरह ताकत केवल केंद्र सरकार को दी जा रही है कि केंद्र सरकार सारी चीजें तय करेगा। केंद्र सरकार ये भी तय करेगा कि कौन सी बॉडी को डेटा फिडुशियरी बनना है और कौन सी बॉडी को छूट दी जा सकती है डेटा फिडुशियरी बनने से। तीसरी और जो एक बहुत जरूरी बात प्रोफेसर गौड़ा ने की, वो ने बोला कि कोई भी जब कानून आता है तो एक तो होता है जो हमारे पास कानून का ढांचा जो पार्लियामेंट से पास होता है, और उसके तहत फिर नियम बनाए जाते हैं, और नियम केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के ही ओर से ज्यादातर बनते हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम ये वाला देखें, जो बिल का जो मसौदा है, जो हमें पता है नवंबर में जो बिल पब्लिक किया था, उसके तहत अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी बड़ी जगहें हैं जहां पे कि कानून में स्पष्टता ना देते हुए केवल बोल दिया गया है कि ये नियम के माध्यम से केंद्र सरकार बनाएगी। उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होता है, कानून में नियम का सिर्फ इतना रूप होता है, केवल इतना रोल होता है कि जो कानून में लिखा है उसको एक क्रियान्वित तरीके से कैसे किया जाए। नियम ये नहीं तय करने नियम के द्वारा ये नहीं तय किया जा सकता कि कानून में अधिकार क्या होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा छूट दी गई है नियमों के थ्रू कानून को डिसाइड करने की, और उन्होंने बोला ये भी बिल्कुल एक गलत चीज है।
एक और जो मुद्दा बहुत जरूरी आपने उठाया वो था कि अगर हम देखें तो इस समय बहुत सारी चिंताएं हैं जनता को लेकर। मास सर्वेलेंस में पेगासस के बारे में हम सबने सुना, और साथ ही में डेटा लीक्स। हम सबको पता है कि अभी जो कोविन, जो हम सबने वैक्सीन ली थी, उसका डेटा किस तरीके से लीक किया गया। और इन दोनों चीजों पे बिल्कुल चुप है ये वाला बिल का ढांचा, इस पे कुछ भी नहीं लिखा गया। जबकि उम्मीद ये थी कि यदि डेटा प्रोटेक्शन पे या प्रिवेसी पे कोई भी कानून आएगा तो उसका एक बहुत बड़ा पहलू होगा कि सर्वेलेंस को कैसे रोका जाए। ये जो गलत तरीके की सर्वेलेंस होती है कि किसी के भी फोन पे आप सॉफ्टवेयर अपलोड कर दें, किसी के भी फोन पे आप कुछ प्लांट कर दें, और जो एक बिल्कुल इस तरीके से बिना रोक के तरीके से जो सर्वेलेंस की जाती है उसको रोक दिया जाएगा। इन सब मुद्दों पे बिल्कुल चुप है कानून। कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है। दो तीन और जो चीजें आपने रेज करी, एक उन्होंने डेटा पोर्टेबिलिटी की बात रेज करी कि ऐसे कानून में होना चाहिए था एक राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, यानी कि आज मैं अपना डेटा किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से इस्तेमाल कर रही हूँ, कल को मुझे वो बदलना हो तो उस टाइप का एक होना चाहिए था, एक पहचान, एक अधिकार की, कि मैं किसी भी समय अपना डेटा ट्रांसफर करके पोर्ट कर सकती हूँ अपने सर्विस प्रोवाइडर को। और साथ ही उन्होंने एक और चीज बोली कि हो सकता है कि इस कानून से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको तो बहुत फायदा हो, जो मोनोपोलिस्टिक कंपनियां हैं उनको तो बहुत फायदा हो, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं जो एक तरीके का कंपटीशन इन्फ्यूज करते हैं, उन सबको लेकर बहुत चिंता होगी कि क्या एक तरीका ये है उन सबको खत्म करने का, ये भी देखते हुए कि जब इतने सारे आपके ऊपर जिम्मेदारियां लग जाएंगी कंसेंट मैनेजर की, डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर की, तो वो तो केवल जितनी बड़ी कंपनियां ही वो ही उनका ठीक तरीके से पालन कर पाएंगी। तो आपने ये सारे मुद्दे रेज करे और अंत में आपने बोला कि ये तो एक ऐसा बिल है जो कि सर्वेलेंस स्टेट को इनेबल कर रहा है, यानी कि सरकार को ही और ताकतवर बना रहा है, और लोगों को और लोगों के संगठनों को और मार्केट में भी जो कंपटीशन के लिए जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं उन सबको ये कहीं ना कहीं कमजोर बना रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गौड़ा, और स्पेशली क्योंकि आपने ऐसे भी मुद्दे उठाए जिनके ऊपर शायद उतनी ज्यादा चर्चा नहीं भी हुई है पब्लिक डोमेन में। सो वेरी grateful to you for joining us and for taking out time, and also for assuring us that you will and the party will be raising these issues as and when the bill comes. I would now like to invite Prashant Bhushan. We all know Prashant Bhushan. He's a friend of all the movements and has always been at the forefront of leading fights related to the Right to Information Act. In fact, even before its inception in 2005. So we'd like to hear from you, Prashant. How do you see some of these issues, especially around centralization of power, and also how it will impact people's ability to access information? And perhaps also one of the key uses of the Right to Information Act has been around accessing information related to appointments and background of people being appointed. So how do you see some of that? आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत भूषण जी का। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में तो लॉयर हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ सभी जन आंदोलनों के साथ जुड़े रहते हैं, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी आवाज उठाते हैं। तो प्रशांत जी से हम सुनना चाहेंगे कि वो कैसे इस बिल को देखते हैं और उनको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर जरूरी है कि हम लोग अपनी आवाज उठाएं। ओवर टू यू प्रशांत। थैंक यू, धन्यवाद अमृता। तो जैसे आपने सुना कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जो पेश किया जाना है, शायद मंडे को ही पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। उसका ड्राफ्ट अभी तक ना तो स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है ना सार्वजनिक किया गया है। तो इसके अंदर इसके डिटेल्स क्या हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन मोटा मोटा एक चीज जरूर पता है हम लोगों को, और उस पे मैं एक्चुअली जो बात अब कहने जा रहा हूँ वो शायद जो प्रोफेसर गौड़ा ने बोला उसके थोड़ा विपरीत लग सकती है। तो देखिए, एक तरफ ये जो प्राइवेसी और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर आने की बात है और उसको प्रोटेक्ट करने की जो बात है, जिसका मेन मकसद डेटा प्रोटेक्शन बिल है। प्रोफेसर गौड़ा ने बोला कि बहुत खतरनाक तरीके से सर्वेलेंस करी जा रही है वगैरह वगैरह,
लेकिन जो इसका फ्लिप साइड है, जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत वो ये कहने वाले हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भी, यानी सूचना के अधिकार के कानून में भी, कोई भी निजी इंफॉर्मेशन किसी की भी वो बाहर नहीं दी जा सकती। अभी तक आपको पता है कि जो सूचना के अधिकार का कानून है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, लेकिन सिर्फ वही पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है जिसका कोई सार्वजनिक चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन which has no relationship to public interest or activity, or where the protection of that personal information is more important than the public interest aspect of it, and there is always a public interest override under the Right to Information Act, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में वो इंफॉर्मेशन बाहर निकालने की जरूरत हो तो वो दी जाएगी, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन या निजी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर हम सरकारी मुलाजिमों के बारे में कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या मिसकॉन्डक्ट किया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई कि नहीं हुई, ये बहुत बार हम लोग सूचना के अधिकार के तहत मांगते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमको पता नहीं लगता कि जो करप्ट, बेईमान या कोई गलत लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है। तो अब उसमें थोड़ी सी निजी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उस पर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का कोई पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक एक्टिविटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वैसे भी पब्लिक इंटरेस्ट में वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। लेकिन अब जो ये ला रहे हैं इसमें बिल्कुल ब्लैंकेट एग्जेम्पशन होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का। इसका मतलब ये होगा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन तो खैर आपको मिलेगी ही नहीं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वगैरह की, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के खिलाफ या उनके अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन। लेकिन उससे और भी खतरनाक चीज ये हो सकती है कि शायद वोटर्स लिस्ट भी ना दी जाए। अब एक जो खतरा मुझे दिख रहा है कि ये लोग हो सकता है कि चुनाव से जस्ट पहले बहुत सारे लोगों के नाम डिलीट कर दें वोटर्स लिस्ट से, जो कि कई बार करते हैं, और ये भी किसी को पता ना लग पाए कि भाई किनके नाम डिलीट करे गए हैं वोटर्स लिस्ट से, क्योंकि वो बोलेंगे वोटर्स लिस्ट तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम ये नहीं सार्वजनिक कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब अराइज हो सकती हैं इस डेटा प्रोटेक्शन के नाम से या पर्सनल इंफॉर्मेशन को छिपाने के नाम से। तो इसलिए ये इसका फ्लिप साइड है। मेरा तो खैर पर्सनल व्यू ये इसमें रहा है कि प्राइवेसी को हम लोग बहुत ज़्यादा अहमियत ना दें। इसलिए ना दें क्योंकि वैसे भी अगर हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, करीब करीब सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमारे फ़ोन पर होती है, वो सारी ये जो एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनके एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हों, चाहे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या कुछ और यूज़ करते हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनमें से बहुत सारी कंपनियों के पास हमारे फ़ोन में जितनी इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है। इसलिए अब इस समय पर्सनल इंफॉर्मेशन को छिपाने की बात करना या प्राइवेसी के राइट की बात करना, मुझे लगता है एक तरह से एकेडमिक है। और अगर उसके आड़ में ये किया जाएगा कि सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसका पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक एक्टिविटी से बिल्कुल घोर संबंध है, या जिसमें क्लियरली जिसको डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी अब छुपाई जाएगी। तो मुझे तो ये इसका ज्यादा बड़ा खतरा दिख रहा है।
कितना ये लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कौन प्रोटेक्ट करेगा, किसको पावर होगी, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन मैं तो सिर्फ इस पर हूँ कि इसके आड़ में सारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का आधा दम एक तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम सूचना मांगते हैं किसी ना किसी का नाम तो आता ही है। अब मतलब इसके आड़ में ये लोग जो लोग भगौड़े हैं, जो बैंक से पैसा लेके लूट के भाग गए, उनके नाम भी नहीं देंगे। बहुत सारे तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जितने घोटाले हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि बोलेंगे उसमें भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। तो ये मुझे ज्यादा बड़ा खतरा आज दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पार्लियामेंट आज चल रही है, जिस तरह से ये लोग कानून बनाते चले जा रहे हैं कि उसको सार्वजनिक भी नहीं करते, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी नहीं देते, उसी दिन बस टेबल करते हैं और बगैर किसी डिबेट के हो हल्ले में बगैर डिवीजन के भी पास कर देते हैं। तो ये हम देख रहे हैं बहुत सारे कानूनों के साथ हो रहा है। अभी फॉरेस्ट एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट्स करे हैं, जो बड़े खतरनाक अमेंडमेंट्स हैं, वो भी इस तरह से पास कर दिए गए। डेटा प्रोटेक्शन बिल भी शायद इसी तरह से पास कर दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज को कोई भी इसका बिल को सार्वजनिक करने की जो बात है, पब्लिक को कोई इसमें इन्वॉल्व करना या पब्लिक को अलाउ करना इसके कि इसमें क्या है इस बिल में और वो अपने कमेंट्स दे सकें, ये सब तो छोड़ ही दीजिए। अब तो पार्लियामेंट में भी कोई डिस्कशन नहीं होएगा और कानून धड़ाधड़ इस तरह से बनते चले जाएंगे, चाहे जितने भी खतरनाक कानून हो। तो एक हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि जो हम लोगों ने एडवांसमेंट करा सूचना के अधिकार के कानून के थ्रू, उसका बहुत बड़ा बैक ट्रैकिंग इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए होने वाला है। मैं यही बस अपना कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। सो आई डू a translation of the key points raised by Prashant ji. So he said that first of all, he condemned the process by which the bill is being brought. He said it's unheard of that there is complete secrecy around the bill. The Parliamentary Standing Committee themselves do not know what's the final version of the bill. And he said that it's very concerning that through the DPDP bill, they are trying to amend the Right to Information Act to put a stop to disclosure of all information which relates to any personal information. He said the Right to Information Act already protected personal information from disclosure, but it was done in a more nuanced form. Wherever personal information was such that it did not relate to public activity or public interest, only then it could be actually denied. And even then there was a public interest override. He said this seeks to do away with all of these more nuanced and detailed understanding and simply puts a full stop, saying that no personal information shall be disclosed. He said if we look at the use of the Right to Information Act, then in his estimation, more than 50% of RT applications actually do involve seeking information which at some point or another would relate to personal information, because personal information is even someone's name. He said whether we look at use of the Right to Information Act related to selection processes, where people very often seek details of background of those being considered, people seek details of misconduct or performance records of those being actually considered for a post, all of this information will become impossible to access if such amendments were to be brought. He said that there is also a very concerning thing that they might even remove existing information from the public domain. He said there is a chance that they may even remove the voter list, and he said that will be very, very concerning, especially given the fact that we will be going into general elections next year, and then there would be no way to check the accuracy of voter rolls, no way to prevent voter fraud, no way to prevent illegal additions and deletions at a mass scale to the voters list.
he said that he feels that we should not give too much priority to the right to privacy, especially now that people commonly use smartphones and other such devices. He said already privacy is compromised to a large extent, and it is difficult to actually try and protect privacy. And he said he's especially against it if in the name of privacy this kind of a bill is being brought around, which actually seeks to weaken the Right to Information Act, which has been revolutionary in the way people have used it to seek accountability from the government, whether that relates to loan defaulters, non-performing assets, scams, or even decision making. He said he's very concerned looking at the way the parliament is functioning, that especially last week we saw the Forest Rights Act amendment bill also go through, that there is a chance that this bill might also just get passed in the din of the House. And therefore he said it's very important that all of us actually raise our voice and try and raise all of these issues in the public domain. So thank you very much for that, Prashant, for the detailed analysis of the concerns with the bill. Now, before I invite Mr. Jawahar Sirkar, who's joined us, who's a member of Parliament and also a member of the Standing Committee, I would like to invite Jayaram from Tamil Nadu to just briefly in 2 or 3 minutes share with us about how people are campaigning in the state of Tamil Nadu. And while he's speaking, I'll also do a share screen and show some of the photographs of the campaign over there. तो अब मैं जयराम को बुलाना चाहूंगी. जयराम NCPRI से जुड़े हुए हैं और तमिलनाडु में आरपोर से जुड़े हुए हैं, और 2-3 मिनट में जयराम हमसे शेयर करेंगे कि तमिलनाडु में किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं इन सब चिंताओं को लेके. So over to you, Jayram. Yeah, thank you, Amrita. Yeah, so it is all our duty to oppose this amendment as much as possible to the amendment to amendment to RTA Act. Specifically, apart from the performance of officials, beneficiaries, information, and all that, we may also lose out on the contract information of many of the infrastructure projects. All these big contracts that are being put in today, they have already been refusing information, saying that these are personal information with respect to contractors. Whatever information that we see, whether they actually have any experience to win this bid and all that. So even those information, I think, will go away. And particularly status of many applications, like if you ask about which is the officer with whom it is pending against, even that 81J is sometimes used. And with all this exemption, I think it is going to get, with this amendment, it will get very, very difficult. So in Tamil Nadu, we have been continuously campaigning against this. I'll just, Amrita, I will just share a small, I will share a... Do you want to share it? Yeah, go ahead. Yeah, I will share. Yes, yes, please go ahead. Yeah. So, So we started the campaign in December 2022. So we started sending a lot of letters to all the MPs in Tamil Nadu, to Lok Sabha and Rajya Sabha MPs, asking them to oppose any amendment to RTA Act. Then we also started a campaign in Chennai, in Trichy, in Salem, many other places as well, parallelly. So we started, there were Rangoli campaigns, there were people coming to offices and getting together at different places, raising their voices, saying, don't kill RTI, save RTI, and so on. So there were there was this Rangoli campaign where a lot of citizens started putting Rangoli in front of their houses, saying that don't kill RTI, save RTI, and so on. So this was in December 2022. This is again in Trichy that we did. Then this is a group, Voice of People group in Chennai, who also joined the campaign. Other civil society groups had also joined the campaign and started raising their voices. We also met a few MPs, member of parliaments, requesting them to oppose this amendment and bill when it comes in the parliament. So Tamilichi Thankapandiyan, she is a South Chennai MP. In fact, just before this call, her office had called and said they got our letter that we sent today as well, and that they will definitely oppose it in the parliament. So hopefully they will. And then we have MM Abdullah and PR Natarajan. These are few MPs who have sent letters back to us
stating that they also stand by this opposition to RTI amendment, and that they will oppose the RTI amendment when it comes up in the parliament strongly. So recently on 23rd July, we also held a large meeting in Trichy, where around 200 people had participated and who raised their voice against this amendment to save RTI. Continuously, we have been campaigning in the social media as well, seeking citizens to tag their MPs in each of their places and question them, and also ask them to oppose this bill when it comes in the parliament as well. And so today we have again sent a reminder letter to all the MPs of Tamil Nadu, both Lok Sabha as well as Rajya Sabha, asking them to oppose this when it comes up on Monday or Tuesday. Thank you. Thank you very much, Jairam. So we've seen some of those images, and also how people are campaigning using their own cultural references and motifs. And हमने देखा कि कैसे तमिलनाडु में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने घरों के बाहर रंगोली बनाकर एमपीज को चिट्ठी देकर। और जयराम ने जो 2 और मुद्दे रेज करे वो भी उन्होंने जरूरी मुद्दे रेज करे। एक उन्होंने बोला कि इसके बाद एक ये भी डर है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जानकारी, जो ठेके जो दिए जाते हैं, क्या उनकी भी जानकारी अब से मुश्किल हो जाएगी लेनी, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है। और दूसरा कि एक जो बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है सूचना का अधिकार कानून का देश भर में, वो ये होता है कि लोग आरटीआई में पूछते हैं कि मेरी अर्जी, या जैसे मेरे राशन कार्ड की अर्जी या कोई निर्णय लेने के लिए कोई मुद्दा पेंडिंग है, तो वो किस अफसर के पास पेंडिंग है, उसका नाम और उसका पद बताएं। तो मैं बोला कि इस टाइप की भी जानकारी हो सकता है आगे से हमें ना मिल पाए। थैंक यू फॉर दैट जयराम। मैं अब बुलाना चाहूंगी मिस्टर जवाहर सरकार को। वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और बहुत जरूरी एक चीज कि वो उस संसदीय समिति के भी सदस्य हैं जिसने कि ये वाला बिल जो देख रही थी। So very warm welcome to Mr. Jawahar Sarkar. He is a member of parliament of the Rajya Sabha. He is from the TMC, and he's also a member of the committee which was examining the bill. And we understand from media reports that recently there was a big furore over it and all of you walked out of the committee. So we'd also like to hear from you on that. So over to you, Mr. Jawahar Sarkar. Thank you first. Can you hear me? Am I audible? Yes, we can hear you. Please go ahead. Okay. Thank you first for this initiative. And I thank those who spoke before me, Mr. Prashant and others, for giving their points of view and their areas where we might get into danger. Now, you see, where the Standing Committee on IT and Communications is concerned, I have attended almost all the meetings. And in one meeting about 3 months ago, they brought in the subject of data protection. That is also because we've been asking that we've been reading from newspapers that you are going in for a data protection final bill. I'm calling it final bill because they have tried, they have put out various drafts in the past and many of the drafts contradict each other. So will you please let us know? So we were subjected to a PowerPoint presentation in very general terms until we had to point out that the MPs are reasonably well-versed and we need not be educated and our time spoiled on this. This happened exactly after the COVID leak came out. So Karti Chidambaram raised this issue that my data has been compromised. And you are trying to bring in a bill to protect data, whereas you have no protection against such breaches. Now, I mentioned this purposely because the sum and substance of the meeting was on whether the data protection bill that you're bringing forward is protective enough of the citizens' interests. And that is where the bill ended. That is where the meeting ended. Immediately after that, we didn't hear anything from them. On Monday, on Thursday, I think, yes, Wednesday or Thursday, we had this meeting, sudden meeting. We realized very soon that it was a ritual meeting. In other words, they had made up their minds
and they wanted the sanction of the Parliamentary Standing Committee. We rose up in unison and said, you cannot take our sanction for granted. Where is the bill? You have given a long note of literature, obviously written by some ad agency or by some student of literature with high flowery phrases and words, but with material का हमाल कहाँ बताओ? तो इस पर इन्होंने बहुत गुस्से हो गए, कहे कि आपको तो पहले बताया चुका है. So we said, no, that will not do. We need to see the final act. And they had no answer for it. And then one of their members who actually drives the committee said that we'll go in for voting. And he quoted a section where voting is to be done in cases of conflict. I said, the conflict itself has not arisen. We have raised our apprehension that we may get into a conflict. So don't get into this voting thing right at this stage. इन्होंने बात नहीं मानी. So we have to go on saying that we have our concerns. अगर आप बिल नहीं दिखाएंगे तो हम पास नहीं कर पाएंगे. Today, in retrospect, I can say that we were about 50-50 in the sense that if they so wanted, we could have gone for a 50-50 vote. But then we didn't know what the casting vote would be. In any case, the principal discussion that we took was that why should we allow them to get through by saying that we lost in the vote, so don't open your mouth. Because we were talking of a principle that a standing committee has to have the materials enough to discuss, not sit and take a cup of tea, sign a piece of paper for an allowance and rubber stamp it. Sorry, that won't do. So since they didn't listen and this gentleman went on shouting that we need a division vote, we walked out. There's no point. We were being made scapegoats and fools. About the forest committee, it was actually a joint parliamentary committee, though they didn't use the word parliamentary, they called it joint committee. And I had also to be there on that committee. Let me be honest and tell you that discussions were held on each section of the Forest Conservation Act in great detail, and apprehensions and concerns were raised by the members and noted, to which the Ministry of Environment gave replies, which were not satisfactory according to us. So the process of consultation and differences of opinion continued for a long time. Finally, in the end, what I'm saying is there were more democratic discussions in that committee, better handling of the committee. But at the end, when it came to numbers, the committee was 2/3 to 1/3 majority in favor of the government. So the 1/3 who were not in favor of this bill put in their notes of dissent. And many of the notes of dissent or the areas of dissent are well known to the public at large, though I can't really discuss it at this stage. But I'm just mentioning the procedurally that was better handled. This was handled rather unsatisfactorily, this IT Standing Committee. Now, in very short, our opposition to it would focus on three areas. Number one, the data protection bill is centered around the protection of our data, not in the enhancement of business of the corporates, not in the enhancement of the business of corporates. Remember, there's a triangular field here. On the one hand, are citizens who are mostly disempowered, who have other business to attend, who have life's problems to attend, and cannot go on chasing wily minds. On the second end, are corporates who have harvested or obtained the data from other recipients of data and should be termed as data fiduciaries. Many of the data fiduciaries are big corporates and they have lots of money to contend with this. On the third end is the government. So, now, what government was trying to do is to play between the citizen and the big corporates. In the other acts pertaining to IT and communications, you have noticed, government has tried to bring in its stranglehold through the IT rules, through the other amendments made. And in a way, I feel that government is
still not in a position to dominate the big technology or big tech companies, or even the Indian big tech companies. They're not in a position to dominate them. Hence, they are trying a combination of carrot and stick. In this one, they provided the carrot to them, saying that we will provide you general protection against citizens' actions. And we know exactly which are the areas now, because we have discussed this for a long time. If the bill that is in the public domain is the bill that is going to be presented, they keep changing the stand every now and then. But assuming that the one that we have on the website is the one that they are coming up with, many of us know which are the areas to look for, to oppose. The question is, will opposition be tolerated in the greater floor of parliament when it was not tolerated, when it was bypassed and deliberately hoodwinked at the earlier stage, that is in the standing committee? I fear that they would not give it much weightage, because once this government has made up its mind, since it is not wedded to democracy at all, they use various stratagems to get them passed. If there is a walkout on a major issue, and there are various provocative reasons to go in for walkouts or to go in for demonstrations of the strength of the United India opposition, they take advantage of it, and in that interim gap of half an hour, in 30 minutes, they pass 3 bills. You have read it in the papers. In 30 minutes, they can pass even 6 bills. I've seen one Rajya Sabha, that is 2 monsoon sessions before this, when they passed 6 bills in about 35 minutes, about 5 minutes, 6 minutes per bill. So in a way, to that extent, MPs would be helpless. They would go on raising these issues, but the areas of concern need to be delineated. And that is why we need public bodies like you. These areas of concern, once they are discussed threadbare and kept ready, it would be required, we will require judicial action to step in. The issue of rules versus act. The act has been kept purposefully skimpy in many places, saying that the rules will decide. But as Ms. Jory said now, the gentleman before Mr. Gowda said, that rules are a byproduct of sections of the act. The sections cannot say the rules will decide. I mean, it's not acceptable in any by any section of the judiciary, however inclined they be. So the act must provide for the direction in legitimate terms. Since this is the faulty act that they are seeking to pass through, we need to be more cautious and to keep these areas of concern. There are basically about 5 or 6 areas of concern, and educate ourselves on these areas. कि इस मुद्दे पर अगर हम सवाल उठाए तो ये ठीक रहे. That's the basic point I'm making. So we have this area of, number one, the government increasing its domain in a very non-transparent manner by giving the corporates more leeway, giving them more exemptions. When you talk of a 250 crore fine, do you think any citizen has the wherewithal to take on a particular corporate for non-cooperation or for non-disclosure and go in for that sort of a stiff punishment? A criminal provision should have been there, because the fear of criminality and the possibility of filing an FIR would act as a better deterrent. But this is a government that believes that where the corporate profits are concerned, they should be allowed free of it, and everything is saltado, as they use the word in some states, matter ko saltado. So get it sorted out in terms of money. So the government has also increased its reach, or is trying to increase its reach through this particular act, through the provision relating to public order. The public order has always been there. This clause about public order and others. I have been in administration for about 40 years, and I've seen this term public order appearing to the benefit of the government. But public order clause
was circumscribed by internal orders. You can't go and use this and that. You have to take this permission, you have to take that permission. And it was basically Now, this government believes in aggression and in expansion of the state. Therefore, wherever the terms public order is concerned, they will try to misuse it to the hilt. As we have seen in the release of two respected activists by the Supreme Court in the Bhima Koregaon case yesterday, they went through 5 years of imprisonment, and the Supreme Court said that you had imprisoned them, but in 5 years you could not establish a case. So that is going to be the style, in the sense that पहले तो power इस्तेमाल करो, पहले तो इसको जेल में डालो, पहले तो इसको ये करो, and after that we will see. And remember, where the citizen is concerned, there is no non-criminality, because the citizen can be accused of having broken or threatened public order under the IT bill, under this data protection bill, and tagged to general provisions of the criminal code, that is the IPC and others. So that danger remains. This is a really, really fearsome thought that government is sanctifying its reach to throttle dissent, to throttle the right to information through this act. Lastly, I would touch upon Section 8, subsection 1J. As other members have said, this subclause is absolutely encroaching upon the fundamental right to seek information. There's no point in fighting them at this rate. If it comes up for discussion in the Rajya Sabha, I would take a chance to speak and elucidate exactly what I'm saying, because these records are later consulted even in legal matters. We would surely oppose it. All the parties that represent India would be opposing it. But the fact is that they will trample over it all and they will get it passed. Once they get it passed, these gray areas of what constitutes public order, how can this act be construed to mean that, how can 8(1)J, what constitutes public information and private information. If a judge takes a helicopter from a state or a central government whose case he's been dealing with and goes on whatever work, and it can be proved that he had gone in basically for a private work, will that be his private domain or public domain? Will that information be held or upheld? So basically, the law is a starting point of our battle. That is what I'm trying to say. The law comes in the battle at an interim point to consolidate the hold of the state, to which we have to come up with appropriate replies. And for that, we really need more than individual MPs or party briefs. We really need activist bodies who have dedicated their attention to these issues to prepare briefs and keep them ready. Keep them ready, because we'll have to test them. Many of our MPs are also connected with the world of law. We need to test them out. And if we accept defeat, just because they have passed a law following what they would say the due process of law, then we don't deserve to have those rights, because rights are something that need to be contested and snatched. Rights are not given on a silver plate. So with these words, I would thank you all for listening to me for a long time. But basically, these are my thoughts that we would need to contest. This is first of the battles, and this battle, even if we are sort of run over, it is only the beginning of this attempt by the government. And the attempts by the corporates would find less sympathy. We all have to be careful while framing the charge. That's all. We all have to be careful in framing the charges. Thank you.
Thank you very much, Mr. Sarkar, and thank you also for saying that certainly you and also the other opposition parties, part of the India coalition, will certainly be raising their voice to the best of their abilities in the present circumstances. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Mr. Sarkar. तो मैं हिंदी में संक्षिप्त में जो मेन मुद्दे उन्होंने हमारे सामने रखे, तो सबसे पहले तो उन्होंने रोशनी डाली कि ये स्टैंडिंग कमेटी में हुआ क्या था। जब जवाहर जी एक्चुअली सदस्य हैं उस संसदीय समिति के, जो कि इस बिल को देख रहा था एक तरीके से, पर उन्होंने बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ महीने पहले एक मीटिंग जब चल रही थी, तो उस मीटिंग में मेंबर्स ने बोला कि ये वाला बिल आप हमारे पास क्यों नहीं ला रहे, हम केवल मीडिया में पढ़ रहे हैं कि ऐसा कोई बिल में अब कोई और चर्चा हो रही है और अब इसका कोई फाइनल मसौदा तैयार हो रहा है, तो आप ये हमारे पास क्यों नहीं ला रहे। और उन्होंने बताया कि एक और जो एमपी जो मेंबर हैं उसी कमेटी के, कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने बोला कि मेरा भी डेटा लीक हो गया है ये कोविन के थ्रू, तो आप कम से कम हमें तो बताइए कि अब ये बिल में क्या है, क्या ये बिल के थ्रू ऐसे लीक्स के ऊपर कुछ काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद एक ये टॉपिक डेटा प्रोटेक्शन बोला गया कि ठीक है ये कमेटी इस मुद्दे को देख सकती है, लेकिन उस पे पहली मीटिंग में तो केवल एक बहुत ही सिंपल सी एक बहुत ही रूटीन टॉपिक्स को लेके केवल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की गई, कोई भी डिटेल्स नहीं शेयर की गई। उसके बाद जो भी थर्सडे को जो एक और मीटिंग हुई, उस दिन भी लाकर उनको केवल कुछ अलग अलग पन्ने दे दिए गए जिसमें कि बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई थी, लेकिन कोई भी जो एक्चुअल मसौदे हैं कि बिल में क्या होगा, बिल का ढांचा क्या होगा, बिल में एग्जैक्ट प्रावधान क्या होगा, बिल की भाषा क्या होगी, वो कुछ भी नहीं दिया गया था। और उन सबको बोला गया, सब सदस्यों को बोला गया कि अब आप ये रिपोर्ट पारित कर दीजिए और बोल दीजिए कि हाँ हम इस बिल से सहमत हैं। बिल बिना दिखाए समिति को बोला गया कि आप बोल दीजिए बिल से आप सहमत है, मतलब एक तरीके से अगर हम समझें तो बोला जा रहा है कि आप एक ब्लैंक चेक पे बस साइन करके हमें दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियस बात है कि सबने इसका जम के विरोध करा और बोला कि आप ऐसे कैसे हमसे साइन करवा रहे हैं, आपने हमें दिखाया तक नहीं है बिल का मसौदा। तो उसके बाद एक बीजेपी के सदस्य ने बोला कि अच्छा वोटिंग कर लीजिए। तो इस मुद्दे को लेकर जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उन सब के सदस्य वॉकआउट करके छोड़ के चले गए समिति। लेकिन मीडिया में ऐसा बोला गया कि अब तो समिति ने अप्रूव कर दिया, जबकि बिल्कुल भी जब तक कि यही सब सदस्य सामने नहीं आए, ये बात सामने उजागर भी नहीं हुई कि इस तरीका का बात विवाद हुआ था इस समिति में। उन्होंने बोला कि अगर हम देखें कि इस बिल के बारे में अब अगर हम चर्चा करें, प्रक्रिया की तो बात हो गई, तो उन्हें बोला कि इस बिल में अगर हम देखें तो 3 मेन प्लेयर्स हैं, एक है नागरिक, एक है सरकार और तीसरा है जो बड़ी कंपनियां, जो कॉर्पोरेट घराने, उसमें जो बड़ी टेक्नोलॉजी की भी कंपनियां हैं वो भी हैं। जरूरत ये थी कि नागरिकों के अधिकारों की इसमें प्रोटेक्शन होती इन बिग बिजनेसेस से और सरकार का एक रेगुलेटरी काम होता। लेकिन उन्होंने बोला कि इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अगर हम देखें तो ये बिल बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है सिटीजन एक्शन से, यानी कि ये छूट देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को और एक तरीके से नागरिकों को कमजोर बनाता है उनके खिलाफ शिकायतें लाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर हम देखें तो सरकार का एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच चलते रहता है बिजनेसों को लेकर। एक जगह तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से उनको बोलने कि आप सिटीजन का सारा डेटा ले लो, हम आपको छूट भी देते रहेंगे, और बाकी जो आईटी एक्ट वगैरह है उनके थ्रू उनके गले दबाने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि हम बहुत सारे मुद्दे रेज तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या सरकार हमें ये मौका देगी, क्या ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है कि हम संसद में अपनी बात उठाएं, क्या हमें ये मौका मिलेगा। और उनको खुद एक डाउट है, क्योंकि उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि पिछले हफ्ते भी कई बिल पास हो गए जब विवाद चल रहा था और वॉकआउट हुआ था, और उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले मॉनसून सत्र में 30 मिनट में 5-6 कानून ऐसे टाइम पे पास हुए जबकि ऑपोजिशन पार्टीज ने वॉकआउट किया हुआ था। उन्होंने 4 की मुद्दे उठाए इस बिल को लेके, जो उन्होंने बोला कि यदि मौका मिला तो वो जरूर उठाना चाहेंगे इन चारों चीजों को। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि बहुत ज्यादा
सरकार ने अपने पास ताकत रख ली है नियम बनाने की, और नियम वो ऐसी ऐसी चीज पे बनाना चाहते हैं जो कि एक्चुअली कानून में प्रावधान होने चाहिए थे, जो बिल्कुल एक गलत चीज है, क्योंकि नियम केवल एक प्रावधान को क्रियान्वयन करने का तरीका हो सकता है, एक नियम के माध्यम से आप नए प्रावधान नहीं बना सकते। दूसरा, उन्होंने बताया कि अगर आप देखें कि जो पेनल्टीज हैं, एक बड़े कॉर्पोरेट घराने को 250 करोड़ या 500 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उनका सजेशन था कि कोई क्रिमिनल एक्शन, FIR रजिस्टर करना, इस टाइप का अधिकार होना चाहिए था नागरिक के पास। तो इसको केवल सिविल वाले डोमेन में लेने से एक बहुत बड़ी छूट दी जा रही है कि आप चाहे बड़े से बड़ा डेटा लीक भी कर दें या डेटा को मिस हैंडल भी कर दें, चाहे आप पूरे हमारे जनसंख्या का 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का आप डेटा मिस हैंडल कर दें, लेकिन आपके ऊपर तब भी केवल इतना ही पेनल्टी का ही है, उसमें और कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं है। तीसरी चीज आपने बताई कि एक जो फ्रेज है पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो एक व्यवस्था है कि एक पूरी कानूनी व्यवस्था सही से चलनी चाहिए, वो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इस बिल में, जो कि बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा कि किस तरीके से सरकार हर एक चीज में पब्लिक ऑर्डर को लाके लोगों को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करती है। आपने उदाहरण दिया जो अभी हाल ही में भीमा कोरेगांव में 2 व्यक्तियों को बेल मिली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि 5 साल में भी आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि इन लोगों ने क्या पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करा। तो इस टाइप की वेग भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। और साथ में ये भी आपने बोला कि इसमें इतनी ज्यादा ताकत सरकार ने अपने पास रख ली है कि इसका हम मान के चले कि दुरुपयोग तो होगा ही, और दुरुपयोग होने के बाद जब तक नागरिकों को न्याय मिलता है, कई बार सालों साल बीत जाते हैं। जैसे भीमा कोरेगांव के केस में 5 साल इन 2 लोगों ने जेल में बिताए, केवल अंत में ये कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इनके खिलाफ तो कोई भी एविडेंस नहीं है। और चौथी चीज जो आपने बोली वो वही कि सूचना के अधिकार कानून में जो संशोधन हो रहा है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता है। और आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि यदि ऐसी कोई जानकारी पता चले कि किसी जज ने हेलीकॉप्टर लिया ऐसे समय पे जब वो कुछ पार्टीज के केसेस सुन रहे थे, तो कोई जानना चाहे कि भाई ये हेलीकॉप्टर किसने भेजा था, किसने इसका पैसा उठाया, क्या इसमें जज गए थे, तो क्या इस टाइप की भी जानकारी अब से नहीं दी जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर सरकार जी की आपने एक तो बहुत आपने रोशनी डाली कि उस समिति में हुआ क्या था, और आपने ये भी बोला कि आपने आश्वासन दिया कि यदि ये आता है किसी भी समय में तो आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे ये मुद्दे उठाने की। सो डीपली ग्रेटफुल टू यू मिस्टर सरकार फॉर दैट। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रदीप प्रधान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम उड़ीसा। We will be listening to Pradeep for about 2-3 minutes to hear from him about how the protest is happening in the state of Odisha. Pradeep, if you can hear me, can you switch on your video and your audio? Okay, meantime, we can connect to AB George. AB, are you there? Yeah, hi AB. So AB George is joining us from Kerala. AB is part of the NCPRI and also the RTI campaign in Kerala, and they have also been raising all of these issues on the amendments to the RTI Act and campaigning around it. AB, please go ahead and speak, and as you speak, I'll just try and put up 2-3 photographs, but I request you to restrict yourself to 2 to 3 minutes, please. Thank you. Yeah. The most shocking thing is what is happening in standing committee meetings, where the fundamental democratic processes are violated, and we are seriously in danger. That is a very serious thing. I mean, my previous speaker was speaking about it. We feel that from the RTA onwards, we need to really start with the Gram Sabha and work with the people and ensure that every Gram Sabha is opposing this new amendments coming and new bill coming in the parliament. It should be a larger fight between the people of this country against the will of, I mean, protecting the will of some small set of big data
multinationals who are going to take over the data regime. So what we did is, one, we started campaigning with the Gram Sabha, managed to get resolutions passed in Gram Sabha. So that is one thing we are doing. Also, we are trying to take protest processions, etc., to MPs' offices, and including the MP, then MP of Wayanad, Rahul Gandhi. And he was kind of, his representatives were welcoming the whole thing, and we were kind of protesting, and we were doing this kind of protest in various parts of the state, and also met with many of the MPs, and all the MPs from Kerala are the opposition MPs, so it was kind of easier. We talked to them and ensure their support for opposing this data protection bill and the amendment on the indirect amendment bringing into the act. And we are continuing, we will be continuing, and we need to scale up. I mean, that's what I feel, scale up this protest across the country through Gram Sabha, so that the common people should protect this right to information. From the struggle of the common people, this act came, and they should protect it against the will of some big bosses sitting in somewhere. Thank you. राइट, थैंक यू वेरी मच एबी फॉर दैट. तो एबी ने बोला कि केरला में काफी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, और साथ में केरला में एक्चुअली ग्राम सभा से भी इन्होंने सक्सेसफुली रेजोल्यूशंस निकाले हैं कि इस टाइप के बिल्कुल अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए. उन्होंने ये भी बोला कि ये हमें एक्चुअली सरकार के जो केंद्रीकरण हो रहा है उस मुद्दे को भी हम हाईलाइट करके बोल सकते हैं कि ये ताकत वापस लोगों के पास ही दी जाए. एक दो और फोटोज हैं केरला से, मैं वो भी दिखा देती हूँ. और एक फोटोग्राफ तो हमने देखी ही प्रोटेस्ट मीटिंग की, साथ में ये फोटोग्राफ है जब एमपी से मिलने गए थे केरला के कैंपेन के साथी. और केरला में एक और कैंपेन चला था, वो था सेंड पोस्ट कार्ड कैंपेन. तो काफी सारे पोस्ट कार्ड भी भेजे गए थे केरला से. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबी. Pravita, if you're there, we'd like to invite you and hear from you. Pravita is a member of the Article 21 Trust, in fact, a founding member of the Article 21 Trust, and someone who's also been engaged with issues related to the Right to Information Act. And what we'd also like to hear from her is specifically on how does she view issues related to surveillance, are those adequately addressed within this bill, and also on the oversight mechanism itself. So आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राविता. आप आर्टिकल 21 ट्रस्ट की फाउंडिंग मेंबर है और साथ में सूचना के अधिकार कानून के मुहिम से भी जुड़ी हुई हैं कई वर्षों से. So over to you, Pravita. Thank you, Amrita. It's great to be here, and I've of course learned a lot from hearing what everyone has said so far. I'll just say a few things very briefly, because I won't go into it anymore since we're quite late as well. I just want to say one thing to begin with, which is that the data protection bill creates a structure where we are made passive. Our data and our information is extracted from us. It is held in trust in a fiduciary capacity by the government or private companies, and they can use this data under certain conditions. The RTI, on the other hand, gave people the right to take and demand our information, what is our data, from the government. The Right to Information Act itself says that information that is accessible to a member of parliament cannot be denied to any citizen. So the difference between the two, for me, appears to be active and passive. In the data protection bill, we are made passive and information is taken from us. I think as a community, as a group, we can also start thinking about how we want to see transparency in technology, what kinds of information we want to access. And instead of data protection bills, it might be worthwhile to start thinking about data access bills. What kind of, how should data be, how should we be allowed to access data? What are our rights as citizens, as people? In terms of surveillance, I think it's already been said, and it is something that we have discussed in great detail, which is that the government has exempted itself from many categories and many clauses under the law. And the government today is one of the largest collectors of our personal data. So it is something that
that we are very concerned with, and it creates the ability for unaccountable and untrammeled surveillance. And Section 18 of the draft bill that is in the public domain refers to those exemptions. And the second issue is the oversight body, which Amrita had mentioned, which is the Data Protection Board. It's the principal authority that deals with violations of the law. The board is also supposed to address grievances and compliances, and incredibly enough, because I think everyone has talked about it already, the process is only online, which means that it automatically excludes so many people who will require to access, especially the grievance redressal mechanism, even if not violations, even if we are not aware of what those violations mean under the law. For many people, as governance becomes more and more digitized, including in welfare programs, including in all forms of governance, the grievance redress mechanism will be very, very vital. So I'll stop here. Thank you. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राविता। तो प्राविता ने दो तीन चीजें जरूरी बोली। एक तो उन्होंने बोला कि अगर हम देखें कि इस बिल में जो नागरिक के जो रोल की एक कल्पना है वो केवल एक पैसिव कल्पना है, यानी कि नागरिक का केवल ये रोल है कि नागरिक की जानकारी ली जाएगी, ऐसा कोई रोल नहीं है। जैसे आरटीआई में तो एक बहुत एक्टिव रोल है सिटीजन पार्टिसिपेशन का, वैसा कुछ भी रोल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उनका मानना है कि इन बिल्स को एक्चुअली डेटा प्रोटेक्शन ना करते हुए डेटा एक्सेस बिल के रूप में एक्चुअली लाना चाहिए। साथ ही में उन्होंने बोला कि अगर हम देखें तो इस बिल में सर्वेलेंस के ऊपर एक भी प्रावधान नहीं है सरकार को सर्वेलेंस से रोकने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यदि पुट्टास्वामी जजमेंट भी देखा जाए तो उसमें भी सर्वेलेंस की बात हुई थी और उसमें इनफैक्ट बोला गया था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत थी इसलिए क्योंकि लोगों की निजता का हनन ना हो सरकार द्वारा। तो इस पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तीसरी बात जिसकी बात पहले भी हो चुकी है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, लेकिन उसमें प्राविता ने कुछ नई चीजें भी जोड़ी। उन्होंने बोला कि अगर हम देखें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड वही बॉडी है जिसको कि सारी शिकायतों का ध्यान लेते हुए एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन कानून में ही लिखा हुआ है कि ये बॉडी केवल डिजिटल तरीके से काम करेगी। इसका मतलब ये है कि जो लाखों करोड़ों लोग जो कि आज की डेट में डिजिटल में नहीं है, और अगर हम देखें कि सरकारी आंकड़े ही हमें ये दिखाते हैं कि केवल 3 में से केवल 1 औरत ने कभी भी इंटरनेट एक्सेस किया है भारत में। तो गवर्नमेंट फिगर्स themselves shows that only 1 out of 3 women have ever accessed the internet। तो ऐसे दौर में यदि आप बोल दें कि एक बॉडी केवल डिजिटल रूप में काम करेगी तो इसका मतलब है कि सैकड़ों लोग और स्पेशली जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, समुदाय है, वो बिल्कुल छूट जाएंगे, वो अपनी बात तक इस बोर्ड तक नहीं पहुंचा पाएंगे। So thank you for that, Pravita. Pradeep, if you can now unmute and switch on your video, please. प्रदीप प्रधान NCPRI से जुड़े हुए हैं और प्रदीप उड़ीसा सूचना अधिकार अभियान ओसा के भी कन्वीनर हैं। एंड उड़ीसा में बहुत एक जबरदस्त अभियान चल रहा है इन सब मुद्दों को लेके। सो प्रदीप, we'd like to hear from you in a few 2-3 minutes, and I'll put on the photographs while you're speaking. Yeah. Thanks, Amrita, for giving this opportunity to speak on our campaign on data protection bill on RTI. In fact, in context of a data protection bill, we have tried to meet the MPs of Biju Janata Dal. In fact, we don't have much expectation from the MPs of BJD because they have their own understanding with the BJP. So in Odisha, the BJP is an opposition party, but they do not make any statement or any great problem for the BJD. Similarly, BJD also extended all support in parliament, even most of the bills which has been passed by the BJP in parliament with the support of the BJD. So, but we have tried our best to meet few MPs to apprise them about the data protection bill, the problems in data protection bill, and the proposal for the amendment of Registration Act. They have simply understood everything, but they have not given an assurance to oppose or support or something like this. So we don't have much expectation from them because every bill which has been passed by the parliament, by the BJP government, they have their own support to it. They have their own understanding.
So we have every doubt that whether they will raise any issues related to data protection bill in Parliament. Second thing is, in respect of our campaign that we have done, we have made a series of a campaign in our state. Well, we have launched a Ratha Jatra, that is a RTI chariot, a campaign that was covered in Puri district. And during our campaign, we have also apprised both in urban and rural areas. We have tried our best to apprise the people how RTI Act is being killed by both the central government and the state government, how RTI Act is being getting diluted, how RTI Act is being suppressed, and how the information is also suppressed by the state government, including also the data protection bill that we have also approached people, how this data protection will going to weaken the Right to Information Act in our state. And we have also made many intellectuals, journalists, advocates, and former bureaucrats about this problem that is in data protection bill and the proposal of the government to amend the Right to Information Act. We have got a lot of support from the intellectuals. We have also requested them to write to the central government for the withdrawal of this amendment to the right to bill that is in contest of the amendment of Right to Information Act. Thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट प्रदीप। और आप सबने फोटो देखी तो जो प्रदीप बता रहे थे कि रथ यात्रा निकाली गई, आप सबने वो रथ की फोटोज भी देखी, तो बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चाएं चल रही हैं देश भर में और लोग मुद्दे उठा रहे हैं अपने अपने तरीकों से, कहीं पे रंगोली के माध्यम से, कहीं पे रथ यात्रा के माध्यम से, और एमपी से भी मिलने की कोशिश चल रही है। और इनफैक्ट मैं अब सुरेश को बुलाना चाहूंगी। सुरेश एदिगा हैं जो बहुत सारे जन आंदोलनों के साथ जुड़ते हैं और अलग अलग तरीके निकालते हैं कि कैसे सपोर्ट किया जा सकता है जो जनहित के मुद्दे हैं। सुरेश, इफ यू कैन हियर मी, कैन यू ट्राई एंड अनम्यूट योरसेल्फ। और सुरेश ने अभी एक बहुत जरूरी कैंपेन उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया। वो उन्होंने कॉल योर एमपी करके एक कैंपेन शुरू करा है। सुरेश, व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट दैट कैंपेन? Yeah, hi Amrita, can you hear me? Yes, we can hear you. Please go ahead. Yeah, all right, thanks Amrita. A wonderful session, learned a lot from this session. So I've started calling the MPs in the last couple of days, and I called about 15 of them so far. I spoke to 7 of them, rest of them did not answer out of coverage. But the gist of the conversation was 2 of them clearly mentioned they have no idea about the bill. In fact, they sounded very surprised that to hear something called the data protection bill. So I told them, in whatever time I got, a few sentences, I explained them. And then 2 MPs handed over the phone to their PAs. The PAs, one of them said he knows about the bill, but he did not share any comments to the MP when I asked him what his personal opinion was or what the MP thought about it. But he did ask me to send a WhatsApp message with all the concerns, and then he will relay that to the MP. And then 2 other MPs, they did say that they know about the bill and they were happy to hear the concerns and that they will present it to their party before it comes up for discussion. So that was like a quick summary of the 2-day campaign so far. थैंक यू सो मच सुरेश। और जैसा आपने सुरेश की बात भी सुनी, सबसे मेन चीज यही है कि वो खुद ही मतलब कर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। तो कॉल योर एमपी कैंपेन, अपने एमपी को फोन करिए, पूरे नंबर लोकसभा की वेबसाइट पे है। जब तक ये सूचना है सार्वजनिक, कम से कम तब तक तो हम उसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो वी वुड इनकरेज एवरीवन इन दिस मीटिंग कि आप लोग भी प्लीज ये कॉल योर एमपी वाले कैंपेन में जुड़े, एमपीज को फोन करें, ये चिंताएं व्यक्त करें। यदि आपको लगता है कि आपको किसी नोट की जरूरत है, तो यदि आप बोल दें चैट में, तो जो एनसीपीआरआई के तरफ से जो नोट्स और जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन तैयार की गई है, वो हम आपको भेज सकते हैं। वी हैव अबाउट 5 minutes for which we can open up. If anyone would like to make any comments, if anyone would like to speak, I can see there are many friends who have been very involved in issues related to RTI and transparency and using information. Professor Jagdeep Chokar is also there.
तो क्या आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे? If you just raise your hand or indicate that you would like to speak, we'd be very happy to hear from anyone. Or if anyone has any questions, यदि आपके कोई सवाल हो इस पूरे वेबिनार में जो चर्चा रही उसको लेकर, we'd be very happy for 5-10 minutes to have a discussion on that. We also have with us friends from the Northeast. Agnes Kharching जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बहुत RTI का इस्तेमाल करा है माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और माइनिंग स्कैम्स के ऊपर, तो वो भी एक सवाल खड़ा हुआ है हम सबके सामने कि क्या उस टाइप का डेटा हम लोग आगे जाके एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं. Commodore Batra, would you like to share anything, speak on, or if you have a question or something? Okay, so Hi, thank you. Yes. No, I have nothing much to add because it has been explained in such a nice way, and we had different panelists. I heard the panelists as well. Only thing similar, I have very small question which I have put it to Anjali on the chat box. When you say data protection of individual or is an organization, that's a point. When we talk of RTI J181J, sorry. It talks of individual if you go for second line. Now here it comes to organization. Let's say I am asking for which company has paid how much for electoral bond. Let's put it that it's a company. Individual won't come. So under this pretext, government has already told Supreme Court they are against the bringing parliament political party under the RTI 3 days ago. Now they can use this clause as well as now donor cannot give information because it's a private. Now, donor can be company name or it could be individual. So that is where there's a little bit of clarification required. Thank you. Thank you. Okay. Anything else? Otherwise, Anjali, would you like to respond and also give any conclusion? I just wanted to add that latest of Suresh Ediga's tweet, I just posted on the chat. You can have a look at the update on that. Thank you. And I think Professor Gowda is also still here. So Professor Gowda, if you would also like to add anything or say anything further, we can take 2-3 minutes. Yeah, so just very briefly, Commodore Batra has asked whether ये केवल individuals की personal data है या organizations की भी personal data है. Actually, कानून में लिखा है personal data of individual है. एक व्यक्ति का personal निजी सूचना के बारे में ये कानून है, DPDP एक्ट जो बनाया गया है और जो बिल लाए हैं. और इसमें लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी सूचनाएं जिनके बारे में आज चर्चा हुई, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का पूरा जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर यूजुअली जो साइन ऑफ होगा वो तो कोई एक इंडिविजुअल ही कर रहे हैं. तो जैसा कि जयराम ने भी कहा कि हम अगर ठेके की भी कॉपी लेना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी लेना चाहते हैं, हम कई बार जानना चाहते हैं कि सरकार ने डिसीजन कैसे लिया, तो हम very often we ask for the file notings. All of that, although it is work being done on behalf of an organization or the government, but it is an individual doing it. तो उन सब जगहों पर जहां पर लोगों के सिग्नेचर हैं, लोगों की डिसीजन मेकिंग है, वो सारी चीजें जो हमें सूचना है उसके बारे में नहीं मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा. ये एक बड़ी समस्या है. As far as डोनर्स के नाम इज कंसर्न, जो पॉलिटिकल पार्टी के डोनर्स के नाम हैं, जी वो बिल्कुल सही बात है कि तो बहुत बड़ी एक मुहिम चलता ही आ रहा है. प्रोफेसर जगदीप चोकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जो पूरा ट्रांसपेरेंसी का मुहिम है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, कहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, कौन पैसे दे रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए. तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत कम सूचना है और अब वो सूचना हो सकता है कि और भी कम मिले, क्योंकि ये कहा जाए कि ये तो डोनर्स के नाम है, एटलीस्ट इंडिविजुअल डोनर्स के नाम तो नहीं हम बता सकते क्योंकि प्रिवेसी का मामला आएगा या पर्सनल डेटा है ये, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी. इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो खैर वो देते ही नहीं है ऑलरेडी सूचना कि कौन पैसे दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है.
बाकी जगह पे जहाँ पे कुछ सूचना मिल भी सकती थी वो भी अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस पर एक बड़ा सवाल उठेगा। मैं बस अपने कंक्लूडिंग कमेंट में ज्यादा नहीं कहना चाहती, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम देख रहे हैं और जो हमने प्रोफेसर गौड़ा से सुना है, हमने जौहर सरकार जी से सुना है और हम पार्लियामेंट में अभी देख भी रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि जो सरकार जब चाहती है कि वो बिल कोई पास करना चाहती है, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। और ये कहकर लाती है सरकार कि हम एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदलेंगे, जिस बिल को हम लेके आएंगे पार्लियामेंट में हम ऐसे ही पास करेंगे। और नंबर का गेम वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तो खैर नंबर का गेम भी नहीं है, अब तो डिन ऑफ द हाउस में जब ऑपोजिशन वॉकआउट स्टेज कर रही है या नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है, उसके बीच में ही वो पास कर रहे हैं, मतलब बोलने का भी मौका कोशिश कर रहे हैं कि बिल पे ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सबने कहा, हमारा काम नागरिक होने के नाते खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें सरकारों को और केंद्र सरकार को ये बोलना होगा, समझाना होगा कि ये हमारे अधिकार हैं। और जब तक आप ये नहीं कहते कि अब हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, हम अपने अधिकारों की बात करना बंद नहीं करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने सुना, इस बिल में तमाम तरीके की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए रख ली हैं टू एक्सरसाइज थ्रू रूल मेकिंग। मतलब सरकार रूल बनाएगी, तो हम जब सरकार रूल बनाएगी तब भी इस बात को कहना बंद नहीं होंगे कि आप हमारी निजता के अधिकार को, हमारी सूचना के अधिकार को प्रोटेक्ट कीजिए, और हम अपनी आवाज उठाना बंद नहीं होंगे। तो ये जो मुहिम है, ये जो कोशिश है कि हम सब इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, जैसे हमने देखा राज्यों में हो रहा है पूरा प्रयास, केंद्र लेवल पर भी दिल्ली में हो रहा है प्रयास, ऑनलाइन हो रहा है प्रयास। ये प्रयास तब तक तो चलेगा ही जब तक ये बिल पारित नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी इस पे हम लोग कैंपेन लगातार करेंगे, क्योंकि ये हमारे हकों का मामला है। और कोई सरकार हमें हमारे अधिकार खुशी से नहीं देती है, वो तो हमें लेने ही पड़ते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट भी करना ही पड़ता है। और इस सरकार में जहां पर इतनी ज्यादा लोकतांत्रिक हमारे अधिकारों पर हमले हुए हैं और लगातार हो रहे हैं, और इस बिल के माध्यम से भी होने की कोशिश है, हम आवाज अपनी उठाते रहें, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बातें ही समाप्त करूंगी। Thank you for that. Professor Gowda, would you like to say anything by way of concluding remarks? D as in dog. Oh, thank you. Yeah, no, this was a very wide-ranging and informative discussion. So thank you very much for organizing it. I think all of us have gathered a range of points, much more than the RTI context alone. And I think all this together will help enrich the overall debate and discussion around what we're having. Thank you so much. Please put this, I think the Facebook Live link will be available for others to tune in and catch it at a different point in time. So thank you very much for taking this discussion forward. Let's hope that there will actually be in the spirit of Parliament discussion on this bill. So with that very optimistic hope, that's also the hope from all of us, कि at least एक मौका मिले एक लोकतंत्र में अपनी आवाज रखने का, और लोगों की आवाज नहीं भी सुननी तो कम से कम जो हमारे सांसद हैं उनकी आवाज तो सुनने का एक मौका मिले। इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते ये बिल जब आए, और अगर इसी प्रारूप में आए जो हमने देखा है, तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि यदि ऐसा कोई बिल आता है तो वो डिफीट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा तो यही है इस बार कि इस प्रारूप में तो हम रिजेक्ट करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल को। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट अस आल्सो प्लीज connect and see how to keep taking forward this campaign.
several ideas, please write to your MP. अपने MP को phone करिए, Twitter, social media, Instagram, Facebook, सब जगह पर डालिए, अपने मोहल्लों में organize होइए, and keep raising your voice. And the hashtag that we are using everywhere is hashtag save RTI. तो जहाँ पे भी आप social media में कुछ डाल रहे हैं, उस hashtag से डालिए, तो हम आपको locate करके we'll further disseminate that information. So thank you very much to everyone for joining this discussion today, and very grateful for everyone who stayed with us for almost now 2 hours that this discussion went on for. And a big thanks on behalf of the National Campaign for People's Right to Information. Thank you and good night.